Yeah, we will start in a few minutes. Okay. Let all the people to join and then we can start. Yeah, so just wait for a few minutes, then we can start. Okay. Yeah, I think two people are there now. Kesav Sharma, hello sir. Hello Kesav Sharma. Nice to see you here. Hello Mitali Machiwal. Good evening. Yeah, good evening Kesav Sharma. I hope you are all doing very well in these days. Ritik Wadhwa. Hello Ritik. I hope you are fine due to hectic schedule of classes. ओ खुशबू और सुधांशु के हाल है? सब बढ़िया है खुशबू, बस आप लोग की दुआ है बस. गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग ऋतिक, गुड इवनिंग केशव शर्मा, गुड इवनिंग मिताली. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर. ऋतिक वाधवा, चश्मा, हाँ, गुड. या एक्चुअली मैंने शायद 2 लाइव मैंने किए हैं अभी तक, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग सो मच कॉन्फिडेंट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी कॉन्फिडेंट, सो इट विल बी बेटर. इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? नहीं बस ऐसा कुछ नहीं. केशव सर्वर टी शर्ट चाहिए डिपार्टमेंट की? हाँ बिल्कुल चाहिए, सस्ते में चाहिए बिल्कुल. थोड़ा मिलेगा टी शर्ट तो तभी तो जाएंगे इधर उधर हैं. बकवास टी शर्ट है भाई. ओहो हाँ, अगर वो ब्लू कलर का होता तो ज़्यादा अच्छा होता. आई थिंक कैंपस आओ फिर मिलेगी. बस बुला लो आप हमें. मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, एक ग्रे और एक मैरून कलर. ऋतिक, सो कैन यू ऑल टेल मी my screen is visible and crystal or clear or not, so that I can start, ताकि मैं स्टार्ट करूँ. Let's say yes or no. Is my screen is visible? Shubham Godial, hello sir. Hello Shubham. Nice to see you here. Clear, but मुझे क्वेश्चन नहीं आता. No. You know all the things, okay? Okay, so I think my screen is visible to all of you, right? And my voice is also audible to all of you. So we can start here. So hello everyone. Welcome to my channel. I hope you are all doing very well. And thanks to all of you, all the 6 people now right here, for joining us in this session. Okay. So today we will discuss the IIT Jam 2015 Organic Chemistry previous year paper. Okay. Now you can see here approximately 18 questions I have sorted out from the
previous year paper of IIT JAM 2015. So it means you can think, you can estimate how much the organic chemistry is so much important to get a good score in any chemistry paper. Okay, so you must have to understand the mechanism rather than going in the remembering the reaction. Okay, so you have to focus on the mechanism part, like why this is happening, why not this happening. You have to think behind the every step mechanism. You have to think why this lone pair is attacking on this side, why not this side. If it attack on this side, what will be happen? So if you think all these things, then you can be able to predict the right mechanism. Okay, मैकेनिज्म ऊपर से ज़्यादा है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर से जाएगा बिल्कुल. Okay, so try to focus on the mechanism to understand the mechanism part rather than remembering the mechanism. So now let's start the first question of the IIT JAM 2015. So the question is the structure of the 2S3R 2-amino 3-hydroxy butanoic acid is. It means we have to find the structure by seeing the opaque nomenclature is given here. You have to find the structure. Okay, so 2S3R, it means sir समझ नहीं आता mechanism. Or you are saying this, Shubham, you are very active in all the groups. Okay, I know you are very active, and you do all the problems of the organic chemistry. So in this question here is a 2S3R 2-amino. It means if we find the RS nomenclature of every chiral center, then you can be able to predict the correct structure. So just start from option number A. So here write the option number A. Here is the NH2, here is the H, here is the H, OH, यहाँ हो गया CH3. So I hope you all know this, how to do the numbering of the RS nomenclature. So just do the numbering here, 1, 2, 3, 4. Okay, now just rotate the bond. Yeah. So 1, 2, 3, 4. So it is coming as S, but you have to see here the lowest priority group is here above the plane. Okay, so that's why you have to reverse the result. So here I am getting S, but the actual chiral stereo will be here R. Right, now see this chiral center. So let me erase C double bond OH here, NH2, here is the H, here is the H, here is the OH, CH3. Now do the numbering. So OH will go to first priority, and then second position is whole group, this one, and this is our third priority, and this is our fourth priority. So now 1, 2, 3, 4, just move in the direction 1, 2, 3, 4. So you will find something like this. So we are getting here R. Okay, but you can see here the hydrogen, the lowest priority group is at the above the plane. So you have to reverse the result, and so if you reverse the result, so you will get here S. It means the stereo of this chiral center will be R, and this chiral center will be S. So now see, you don't have to calculate, you don't have to solve all the options individually. You have solved the one option, you can do this from one option only. See here. Now you can see this NH2,
इन द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन द राइट साइड, यहाँ पे राइट में है, लेकिन बी ऑप्शन में जो हमारा NH2 है ये हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी जो स्टीरियो है वो हमारी चेंज होकर के यहाँ से S हो जाएगी। और यहाँ पे जो OH है ये आपका राइट का, ये आपका लेफ्ट में है, यहाँ भी लेफ्ट में है, हाइड्रोजन राइट में है, यहाँ भी राइट में है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो स्टीरियो है, इसका पहला वाला जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसकी स्टीरियो का ही बराबर होगा। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ S। नाउ सी दिस कायरल सेंटर इन द C ऑप्शन। इन द C ऑप्शन अंशु पल हमारे भी ऑर्गेनिक अच्छी करा दीजिए सर जी। You have already a very good organic chemistry, you know. वैभव मीना भाव प्रणाम, प्रणाम भाव प्रणाम। Okay, so in the C option we have, you can see here is also S, and now this chiral center, because see here the OH is on the left side, but in the C option OH is on the right side, so that's why the stereo will be changed. So here it is a S stereo, now here it will be R. Now see in this last option, this chiral center has a stereo will be R, and this stereo center will be, this chiral center stereo will be R. Now in the question you have given that 2S 3R. It means on the 2 position the chiral center should be S, and on the 3 position chiral center should be R. Okay, so now if you see all the options you will find the C option is correct, because in the C option the 2 position the chiral center is a S, now here is a 2S, and here and on the 3 position the chiral center is a R. You can also match here from this question, here is a 3R. It means C is the correct answer. Okay, now see the next question. The ene that produces a chiral compound upon treatment with Lindlar's catalyst is. Okay, so we have to Anju Pal, nice explanation. Thank you so much Anju. Thanks so much for joining here. Yeah, thanks so much. Now see this question is yeah. So in this question, it is saying that you have to do reaction with LC. I am using here short form Lindlar's catalyst as a LC. Okay, so here we have to react with the LC. It means we have to, हमें करानी है रिएक्शन लिंडलार्स कैटलिस्ट से सारे ऑप्शंस को, ठीक है। और जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो हमें चेक करके बताना है कि क्या जो हमें मिला है प्रोडक्ट क्या वो कायरल कंपाउंड है क्या, ठीक है। अगर इन चारों ऑप्शन में से आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन हम जो कराएंगे रिएक्शन लिंडलार्स कैटलिस्ट से, अगर हमें प्रोडक्ट कायरल कंपाउंड मिला तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इट मीन्स आई होप यू ऑल नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ अ Lindlar catalyst. So the work of a Lindlar catalyst is if you have alkyne and you are doing the reaction with LC means Lindlar catalyst. What is the Lindlar catalyst? See here, H2PD BaSO4. BaSO4 is acting here catalytic poison. Okay. So here what happen, अगर हम अल्काइन पे रिएक्शन कराते हैं लिंडलार कैटलिस्ट से तो ये क्या करता है, अल्काइन को अल्कीन तक रिड्यूस करके छोड़ देता है, अल्कीन के आगे नहीं जाएगा, अल्कीन तक ही रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगी। इट मीन्स इफ यू टेक अ लिंडलार कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइन, द अल्काइन विल चेंज इनटू अल्कीन. Okay, it will not go further reduction up to alkane. It means that you will get here alkene. It will not further reduce. Okay, तो इसका मतलब ये है कि
कि अगर हम अल्काइन की रिएक्शन कराएं लिंड-लार कैटलिस्ट से तो हमें जो क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, और उस अल्कीन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो हमारी होगी जेड अल्कीन हमें मिलेगा लिंड-लार कैटलिस्ट अगर लेते हैं अल्कीन के प्रेजेंस में. तो नाउ डू द रिएक्शन इंडिविजुअली. सो here is the alkyne, right? So do the reaction. What happened? Just हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन. जब होगा रिडक्शन तो हमें क्या मिलेगा, जेड अल्कीन मिलेगा. तो बस हमें क्या करना है, जेड अल्कीन बना देना है. तो कुछ ऐसा बना देंगे हम, ऐसा. तो ये हो गया जेड, राइट. नाउ यू कैन सी हियर देयर इज no chiral center. There is no chiral center in this compound. There is no chiral center in this compound. So that's why अगर इसमें chiral center है ही नहीं तो ये फिर chiral compound होगा ही नहीं फिर, right? So that's why the A option is incorrect because the product is not a chiral compound. Now see the B option. If you do the reaction, the B option with LC means Lindlar catalyst, then you will find the triple bond will get reduced to alkene. And just make the Z alkene here, because here Z alkene something like this. Okay, so this is our Z alkene. Yeah. So here is the hydrogen. Okay. Now you can see, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक जो है कायरल सेंटर है. दिस इज आवर कायरल सेंटर बिकॉज दिस ग्रुप एंड दिस होल ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन, these four groups are different groups, right? If someone says that this group and this group are same group, but no, you have to see very clearly, you have to see very with focus. Okay, so you can see here this alkene have a Z geometry, Z stereochemistry, and this alkene have E stereochemistry, E alkene, right? So that's why Z and E, it means it is a pseudo-chiral center. It is a pseudo-chiral center. And you know that pseudo-chiral center is also a chiral center. Okay. Suppose अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता, कि डबल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड, ये भी ई है और ये भी हमारा ई अल्कीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस केस में ये जो हमारा सेंटर है ये हमारा कायरल नहीं होता, राइट? दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, राइट? आई होप यू हैव स्टडीड दिस इन द stereochemistry chapter. What is a pseudo-chiral center? Pseudo-chiral center is observed when you have three stereo center. Okay, here this is a stereo center, this is a stereo center, and this is a stereo center. Okay, and here the two stereo centers have different configuration. On the left side it is a Z, and on the right side this alkene is a E. So that's why it is a pseudo-chiral, and we know that pseudo-chiral is also a chiral compound. Okay, so that's why B could be a correct answer, because we are getting a chiral compound upon reduction with the LC, right? Now see the third option. So let me erase all this. See, okay. So if you do the reaction of C reaction with the LC, you will find something like this. So this is a Z alkene. You can clearly see that here is no any chiral center, that's why it is also not a chiral compound. Okay, so C option is also wrong, right? Chiral center means the all four groups on the sp3 hybridized carbon should be different. Okay,
chiral can be two possibility. One can be pseudo chiral center also. So pseudo chiral center is also belongs to chiral center. Okay, I hope you all know this. You have studied in this stereochemistry chapter, right? ओके, आर्यन केसरी सर आपके भरोसे बैठे हैं, डेली ऑर्गेनिक की क्लास लिया कीजिए. Thank you, Aryan, for joining here, but I know you are already studying in the Indian Institute of Science, Bangalore. Yeah, I know. Thanks so much for joining here. You know already all these things. Yeah. So here, so that's why C is also not a correct answer, because the product is not a chiral compound. Now do the reaction of D option with LC. When you do the reaction, let me erase. When you do the reaction with LC, you will find something like this. Again, this group is same, so that's why here this center is not a chiral center, not a chiral center. It means D option is also incorrect. So the correct answer of this question is B option. B. Okay. I hope there is no doubt in this question. If you have doubt, you can ask me in the comment box. You can type here. I can try to explain as much as possible your doubts. Okay? Yeah. I think no doubt up to till. So now go to the इतनी इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है क्या? वैसे ही प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ा के दिमाग ख़राब कर दिया है, अब आप भी. ओके आर्यन, सॉरी. या ओके, एक्चुअली देयर इज सो मच साउथ इंडियंस students are also joining sometime, so that's why I am using sometime English also, but don't worry about that. I will use Hindi. Okay. Yeah, Hindi is our मातृभाषा, so I can't forget. मैं उसको कभी भुला नहीं सकता. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन. वी हैव 18 क्वेश्चन. ओके, we have 18 question. Now go to third question. So this is our question here. So an organic compound P, okay, C4H8O is positive to Bayer test. Okay, so write here P. Okay, and on treatment with HCl, so we are doing this reaction with conc HCl here, conc HCl, and we are getting here CH3 CH2 Cl plus CH3 CHO, right? So and और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि जो हमारा P कंपाउंड है, ये हमारा बेयर टेस्ट को शो करता है, पॉजिटिव है बेयर टेस्ट को. इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव टू बेयर टेस्ट, एंड बट इट इज़ इनर्ट टू सोडियम मेटल टेस्ट, Na metal, right? So you have to find the structure of P. What could be the structure of P? So now let's start the heat and trial method. Just do the reaction individually and you will get an answer very easily. Okay, so let's start. Let me erase all this. Okay, so in this question we have taken here conc HCl. So conc HCl means concentrated H plus ions will be in the solution, right? So just do the reaction, first option with H plus. So this lone pair will take H plus. Now you will find something like this, OH2 plus, right? Okay, just wait. I am getting a call from my father. Just wait. Hello. हाँ पा, अभी एक्चुअली क्लास ले रहे हैं मैं. हाँ ठीक. ओके, या फाइन. सो नाउ you can see here
because we know that we have taken here, okay, Vidali is laughing, yeah, I just got a call from your father, because I think there is no pause option in the live streaming, so that I can pause, so I have to take the call. Okay, yeah, so see here, there is a conch, yeah, sorry, there is a conch H plus in the solution, so that's why this OH lone pair will take H plus and you will form something like H2O plus. Now we have Cl minus nucleophile will come and attack on this position and this H2 will be leave and you will find, और हमें कुछ ऐसा मिलेगा देखने को, कुछ ऐसा या Cl, okay, and plus H2 plus H2, okay. Now do the same procedure here, just take a H plus, okay, just take a H plus. Now see here, we know that between the oxygen and carbon is a more good nucleophile, so that's why we have to delocalize the oxygen lone pair and the carbon anion will take proton, because carbon anion is a more good nucleophile than, more good base than oxygen. So that's why we are doing here by delocalizing the oxygen lone pair and do the reaction. So you will get something like this. H here, double bond here, here is a positive charge. Now Cl minus will come, because Cl minus is also present in the solution and it will attack on this, and because the oxygen has a positive charge, so ये चाहेगा कि हम बाहर निकले, और ये बाहर तभी निकलेगा जब Cl minus जो है इस पे अटैक करेगा, and then this bond will get break and you will find something like this, CH3 CH2 Cl plus C double bond O CH3 and here H. I think आपका जो आंसर है वो आपका आ गया यहीं पे, राइट. इन द क्वेश्चन आपको बोला गया था कि P की रिएक्शन कॉन्क HCl कराने से हमें CH3CH2N मिल रहा है और CH3CHO मिल रहा है, जो कि हमने बी ऑप्शन में ये ऐसा पॉसिबल हो रहा है. ओके, सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बी. बट स्टिल some students will ask, why not C, why not D? So for student satisfaction, I am doing this reaction with C and D also, right? So see, if you do the reaction with the H plus, so what happen? The lone pair of the oxygen will gonna delocalize and it will take proton and you will find something like this. Here is a positive charge, right? And now Cl minus will come and attack on this center. Wait, here is a positive charge, CH3. Okay, just wait. So here we have oxygen here, something like this, and because the oxygen lone pair get delocalized, so here we have positive charge here, right? And you have here H. Now Cl minus will come, here is a CH3. Now Cl minus will come and attack on this carbon and bond gonna break. Now you will find something like this, CH3Cl plus C double bond O, something like this. Okay, so this is also not a correct answer. So C of A is also incorrect, B is correct, C is also incorrect. Now check the D option.
if you do the reaction with a conc HCl, so what happened? This O lone pair will take proton, and after this taking proton, you will find something like this. Now the Cl minus comes. Now the Cl minus comes, and it will do attack. It will do attack on the center, and bond gonna shift here, and it will gonna leave, and you will find something like this: CH3 OH plus double bond Cl, and this is also not a correct answer. Okay, so that's why the correct answer is B, because in the B you have got here CH3CH2 plus CO CH3. Fe3 plus के टर्म सिंबल करा दीजिए सर जी. Okay, Ritik, I will do. Yes, I will mostly do here organic chemistry. You know already, but I will do. Okay, Ritik. Yeah. So the correct answer of this question is B. B is the correct answer. Now go to the next question. This question is from inorganic chemistry. Okay. So I will not solve this. I am gonna delete this slide because this question is related to inorganic chemistry in the analytical chemistry. Yeah, this is very easy question, but I will not do. So just delete the slide. Yeah, this is a question. Now see this question. This question is very interesting. I hope you are already familiar with this. Can you tell me what is the name of this reaction? It's basically a name reaction. I hope you all know this. In the class 12, we have already studied this reaction. So can anyone tell this? What is the name of this reaction? Anyone? Just type in the comment box name of reaction. Yeah, I am waiting for your reply. Okay, no problem if you don't know. Okay, fine. Yeah. See. Sorry. So in this question, okay, Mithali Mashwal, haloform reaction. Yeah, this is correct. Yeah, good. Yeah, this reaction is a haloform reaction. I hope you all have familiar with this. Mithali have given a correct answer. Thanks, Mithali. Okay, so I think you know the answer also. Which option is correct? Can you just predict by seeing the reaction? If yes, then you can type in the comment box. I am waiting, okay? Okay, fine. See here, this reaction is basically a haloform reaction. Okay, if you don't have remember the name of reaction, then there is no problem. Don't worry about that. Just go through the mechanism, step by step. Okay, just see the reason. What is the work of the reason? You will like बहुत ही आपको अच्छा फील होगा. आप easily आप क्वेश्चन को कर सकते हो. So just start this question. So here we have reason here NaOH. You know this NaOH is a base. Okay, and the work of base is to take a proton, right? I hope you all know this. So, and also here
sorry. So here the base will come, OH minus will come, and it will take a proton, hydrogen from this alpha position, because this alpha H is a acidic proton, right? So that's why this proton will be loose, and here the enolate formation will be occur, and you will find something like this. Okay, so here is the alpha methyl group here. Saurabh Yadav, yes sir. So can you tell me, Saurabh, which is the correct answer of this question? By just seeing the reaction. तब तक मैं करता हूँ, है ना? Okay, so here हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा इनोलेट, राइट? इनोलेट कुछ ऐसा. Yes, and now we have in the solution, we have BR2, Nobel Chemical Scientist Academy. Good evening, Sudhanshu sir. Good evening, Nobel Chemical Science Academy. Good evening. Thanks so much for joining here. Okay, so here हमारे पास ये बन गया इनोलेट. अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में Br2 प्रेजेंट है, Br2, and now this Br2 is work as a electrophile. So what happened? You know this already, because Br is a soft center, so that's why हम O माइनस को चार्ज को कराएंगे डिलोकलाइज और ले जाएंगे कार्बन पे, और उसके बाद हम कराएंगे अटैक. इट मीन्स O माइनस चार्ज विल गो डाउन, and then this double bond of the carbon will go attack on this Br, and Br minus will leave. So let me take a different slide so that I can complete. Control M. Yeah, fine. Yeah, Mithali, correct. The B option is a correct answer. Good. Yeah, correct. So, and after this, you will find something like this. Here, double bond O, here is a Br, here is a H. 2 hydrogen is still left, because अभी भी हमारे पास more acidic hydrogen left है, इसीलिए बेस जो है, बेस फिर से आएगा और लेगा प्रोटॉन, एंड आफ्टर दिस देन आपका फिर से बनेगा इनोलेट, एंड देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. O minus here, here is a Br, and because Br2 solution में अभी भी present है, right? So that's why this O minus will go delocalize, and this double bond will attack on the Br, and this Br minus will leave. Saurabh Yadav, good initiative, wow, keep it up. Thanks so much, Saurabh. I hope you are fine and doing well, and thanks for joining us. Yeah. So after this, what happened? So let me copy this. Copy, paste. Oh my god, what is this? I think this is very ridiculous things I have done now. Okay, see, okay, fine. So what happened now? So here we have something like this, and double bond here we have Br,
and here still one hydrogen is left, so that's why the base will again come and take this proton, and then again enolate formation will occur, and then again you will find something like this, O minus here, double bond, Br, Br, and because in the solution we have Br2, right, and a Br2 will work as an electrophile, so that's why the O minus will gonna delocalize and it will attack on the Br, and this Br minus will leave, and after that you will find something like this, double bond O here, something like this, Br, Br, Br. Okay. Okay, fine, sorry. And now the OH minus will work as a nucleophile, because here is a CBr3. Okay, CBr3 is now becomes a very good living group, because there are 3 bromide group attached to the carbon. Okay, so that's why now the OH minus will attack on the carbonyl, will work as a nucleophile rather than base. And what happened? The double bond of oxygen will shift on the oxygen and then again gonna come back, and this group CBr3 minus will leave, and you will find something like this, double bond O here, here is a OH, and plus CBr, Br, Br, and here negative charge, and because you know this is a negative charge, so it will take a proton, from this carboxylic acid, and you will get something like this. After the workup you will find CHBr3 plus this is above the plane, and here you will find something like this. I have स्पेस की थोड़ा सा कमी हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे एडजस्ट हम कर रहे हैं. ओके, सो ये हमारा हो गया, एंड यू कैन सी हियर यू हैव CHBr3. CHBr3 मीन्स दिस इज अ हैलोफॉर्म. सी अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा देखने को मिले CHX3, X can be F, X can be Cl, X can be Br, X can be iodine. So these type of general formulas called haloform, right? So this is a CHBr3 is a haloform. Okay, you can say this haloform, and this is our acid, because it has a chiral center, so that's why it is a chiral acid. So the correct answer of this question is B answer, CHBr3 and a chiral acid, and this reaction is called haloform reaction. Yeah, this is called bromoform. Okay, yeah, correct Saurabh, this is called bromoform. Like आपने ये भी सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म वो क्या होता है CHCl3, ठीक वैसे यहाँ पे CHBr3 ब्रोमोफॉर्म. एक्चुअली वी यूज द क्लोरोफॉर्म, किसी को बेहोश करने में इसको हम यूज करते हैं. आई थिंक सौरभ हैव यूज दिस टू समवन. सौरभ okay, so now let's go to next question here. Yeah, this question is very interesting. Na bhai. Okay, so you have not used a chloroform on any other person, you must have to use. Then you can feel the organic chemistry. What is the organic chemistry? सीवी सर ने करवाया है ये, सीवी सर ने करवाया है ये. या ऑफ कोर्स सीवी सर ने कराया है, बिल्कुल.
Shredded IIT Indore. Thanks so much, Shredded. Okay, Shredded. Thanks so much for joining us here. Okay, so this question is very interesting. So anyone can answer in this comment box. Chervam sir marenge. Okay. So see here. So the question number is here six question numbers. So can anyone tell the answer? What could be the answer? Yeah, you can tell. I am waiting for you all. Sakat को आता है. Yeah, okay. You all have to try, okay? Then you get a. You at least have to try. Okay, so see. The correct state of reason required for this transformation is. So don't be panic, okay? Don't worry about that. So just go through option by option. Okay, organic chemistry is nothing. You have to just see the reagent. And you have to see the reagent. You have to see the reagent and then you have to see the reactant. And see what is the work of the reagent on the reactant. Okay, and then you will feel organic chemistry is very easy. Okay, so now let's start. Proceed to this question. So now take a first option. We have CrO3. Suppose I have taken OH here, CrO3 in the first step. And you all know that CrO3 is a oxidizing agent. So it will oxidize alcohol into tell me, into ketone. Okay, into ketone. You will find something like this. And after this, if you take acrylonitrile means acrylonitrile, the structure is something like this. CH2 double bond, C triple bond N. Okay, so just take here CH2 double bond, C triple bond N. Right. Okay, so ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर मैं ये लूँ रिएक्टेंट और ये ले लूँ रीजेंट तो हमें ये मिल जाएगा. तो ये बिल्कुल ही गलत है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. रिएक्शन होगी नहीं अभी, बिकॉज वी नीड बेस टू abstract the proton. Okay, then it can attack on this position. So there is, in the first option, there is no base present in the second step. Okay, so it is not possible to get this transformation. So this A option is incorrect. So A option is incorrect. Okay, now check the B option. Okay, see here again you have something like this. B option, you have alcohol here, okay, cyclohexanol, and I am taking an O2. So O2 is a oxidizing agent. It will oxidize, right, into ketone, right? But after the ketone, if you take a methyl acrylate is something like this. Then again there is no reaction will be happen, because here there is a no base. यहाँ पे कोई बेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन जो है नहीं होगा, प्रोसीड नहीं होगा. इसीलिए बी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट.
मिताली मैचुअल सी होगा सर. Correct, Mitali. Yeah, C is the correct answer. Correct. Good. C is the correct answer. So B option is also eliminated. Now see the C option. Just go heat and trial. The question is very easy. So if you do the reaction of cyclohexanol with CrO3, CrO3 is the oxidizing agent. It will convert the OH into ketone. And then we have taken here NaOMe and AmeOH. This is a base. Okay. So base will take proton. The base will take proton. So OMe minus will take here alpha proton, because this is an acidic proton. And after this, enolate will be formed. Enolate will be formed. Something like this. O minus double bond. Right. And after that, अब हमने जाके लिया है मिथाइल अक्राइलेट. और मिथाइल अक्राइलेट जो होता है कुछ ऐसा होता है. राइट. सो अब क्या होगा, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है नीचे आकर के 1,4 एडिशन होगा, 1,4 अटैक होगा. राइट. दिस विल गो ना हियर एंड द बॉन्ड शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन. एंड यू विल फाइंड हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा. हियर इज अ डबल बॉन्ड O, समथिंग लाइक दिस. सो हियर जस्ट वेट. Okay, something like this, right? And now what happened? Just do the workup, and when you do the workup, H plus, then this O minus will gonna come back, and it will take a proton, and now you will find this product. So it means C is the correct answer. The correct answer of this question is C. Now see the 7th question number. The correct order of the pKa value of this conjugate acid compound given below is. Okay, I hope you know this. The pKa means because here अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. नाइट्रोजन हियर इज आल्सो नाइट्रोजन. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वी नो दैट द pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. राइट. जो ज़्यादा बेसिक होगा उसकी pK जो है ज़्यादा होगी. सिंपल सी बात है ना. सो अब हमें चेक करना है कि कौन सा मोर ज़्यादा बेसिक है. मोर बेसिक मीन्स कि कौन सा किसके पास लोन पेयर को डोनेट करने का टेंडेंसी जो है ज़्यादा है. लोन पेयर टेंडेंसी विल इंक्रीज. इट मीन्स basicity will increase. It means pKa will be increased. Okay, so you have to check lone pair donating tendency. So anyone can tell me what is the correct answer of this question? Okay, so yeah, you can tell in the comment box. Okay, so see here what happened. This nitrogen have a lone pair, right? This is a delocalized. This nitrogen have also lone pair, right? This nitrogen have also lone pair. This nitrogen have also lone pair, and it is a localized, right? So you have to check the more basic. So the more basic means the more electron pair, the more lone pair donating tendency. Okay, so the three option, because this is a
because this is a, you can see here the lone pair is delocalized, it means the lone pair is busy. ये जो लोन पेयर है ये आपका रिंग के अंदर में रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इसीलिए ये हमारा इजीली अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए. दैट्स वाई वन, जो हमारा वन ऑप्शन है ये हमारा लिस्ट बेसिक होगा. इसीलिए वन तो वन सबसे लिस्ट किसमें है, बी ऑप्शन में भी लिस्ट है, बी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है. इट मीन्स कि वन जो है हमारा है सबसे लिस्ट होगा, राइट. वन जो है सबसे कम बेसिक होगा. देन आपको चेक 2, 3, 4, 2, 3, 4. इन द 2, 3, 4 द because if you compare the 3 and 4, because the 3 nitrogen is a sp3 hybridized and here this nitrogen is a sp2 hybridized, and you know that the percentage of a S character, the percentage of a S character is inversely proportional to basicity, right. So जहाँ पे percentage of S character, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा वो आपका ज़्यादा बेसिक होगा. दैट्स वाई द 3 विल बी मोर बेसिक दैन 4, राइट. एंड नाउ सी द 2 ऑप्शन. नाउ सी द 2 ऑप्शन. इन द 2 ऑप्शन, in the 2 option you have only 2 alkyl groups here attached. This is a 3-member ring, but here in the 3 option you have 5-member ring. Okay, 1, 2, 3, 4 carbon. It means 4 alkyl groups are attached here. They are donating by the plus I effect. But in the second option only 2 carbon applying the plus I effect. So that's why the order will be the correct answer will be C here, right? The correct answer will be C. Yeah, Mitali has given the answer C answer. Yeah, correct. C is the correct answer. Okay. So 3, 2, 4, 1. You just have to check the basicity, lone pair, donation, tendency. Now see the question number 20. Yeah, this is very easy question. I hope you must know this. So can anyone tell this? What is the answer of this question? The question is, what is the ppm? What is the delta value of the bold hydrogen indicated in all those 4 options? You have to arrange them in the order. Okay, I think this is a very easy question. Okay. Yeah, see, I hope you all have studied in the NMR spectroscopy chapter. See here, I hope you know this. See, you must have to remember the chart. So this hydrogen has a ppm value of approx 5 to 7 ppm, right? And this hydrogen attached to this benzene ring, directly attached to benzene ring, it is a 7 to 8 ppm value. Okay, so Mithali has given the B answer. Okay, Mithali, so let's see is your answer is correct or wrong. Let's check. Okay, you have given the answer B. Okay, fine. Okay, here, and you know that in the alkyne, the H bonded with the directly to alkyne have a ppm value is approx 2 to 3 ppm, right? I hope you have studied in the NMR spectroscopy, and this H3 CH3 sp3 hybridized carbon
this has 1 to 2 ppm. So you can see here, and just it's a very easy, you can arrange. So the highest value is of 2, then you have 1 option, then you have 3 option, then you have 4th option. It means the correct answer will be B. The B is the correct answer. Mitali, yeah, you are right. Good. Correct. Now see the 9th number. 9th number is also a very interesting question, conceptual question. See here, what is happening in this reaction? Sorry, this is not a reaction. This is basically a single choice question. You have to choose the correct answer. Okay. So in the question, which of the following are correct for the SN-AR reaction? I hope you all know the SN-AR reaction, right? So SN-AR reaction कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा है, and I am taking here nucleophile, right? And this nucleophile will attack on this center because the bromine is a electronegative, right? So that's why it will create a electron deficient position at the center, and that's why the nucleophile is attacking on this center. Okay. Now the bond shift this, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ. तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को. Here is Br, here is nucleophile, O minus, O minus, and here you have double bond, right? So ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं SN-AR रिएक्शन. SN-AR रिएक्शन. अब क्या होगा, O माइनस कम बैक करेगा, ये फिर कम बैक, बॉन्ड कम बैक, एंड देन दिस Br विल एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, और ये जो Br है ये आपका लीव कर जाएगा, और आपको फिर देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा, न्यूक्लियोफाइल NO minus. So this is the SN-AR reaction. Okay. This is a SN-AR reaction, right? Okay, fine. So of course it is a second order reaction, correct? It's a second order reaction. This will also take a participant in this reaction, and this nucleophile and this reactant will both participate in the rate of the reaction. That's why it is a second reaction order. It means it is a correct. First option is correct. Now see, Kh by Kd is greater than 1. Okay. So you can see here, there will be no effect by the Kh and Kd. Okay, there will be no effect. अगर आप H ले लो, या आप अगर H को रिप्लेस करके आप ड्यूटेरियम ले लो, तो रिएक्शन जो है उसमें उसका जो रेट है वो आपका इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज जो हमारा रेट है वो आपका इस पर डिपेंड कर रहा है, जो हमारा लिविंग ग्रुप है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है, इस पे जो रेट है ये आपका डिपेंड करेगा. So that's why the Kh by Kd should be same. It means the Kh by Kd should be 1. It means that second option is incorrect. Okay, second option is incorrect. I hope all doubts are clear till now. See, SN-AR reaction will follow the second order kinetics.
आई होप यू ऑल नो दिस. ओके, दिस इज अ एसियन एयर रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि आपके पास बेंजीन रिंग होगा, एरोमेटिक रिंग होती है, उसमें एक लिविंग ग्रुप अटैच होगा, जैसे यहाँ पे बी आर है, और उस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा. ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है इस पोजीशन पे, और उसके बाद आपका बॉन्ड होगा शिफ्टिंग. बॉन्ड शिफ्टिंग होने के बाद ये जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये आपका नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज करता है, रिंग के बाहर ले जाता है. ओके, एंड देन अगेन this negative charge is going to come back here, and then again the Br will leave. And this is basically because here you will find कार्बो अनायन इंटरमीडिएट, बिकॉज यहाँ पे कार्बो अनायन भी बन रहा है, so that's why the third option is the correct. Okay, right, because there is a one intermediate, and you know that number of intermediate number of a transition state equal to number of a intermediate plus 1. It means there will be a 2 transition state. It means 1, 3, 4 is a correct answer. C is a correct answer. So the correct answer of this question is C. Right. Now move to next question. Yeah, that's so very interesting question. So can anyone tell me what is the name of this reaction? Fast. 2 seconds you have time. Only 2 seconds. You take 5 seconds. Okay. Just tell me name of this reaction. This is very easy. This is very easy question. Okay. You have to tell the name of this reaction. What is the name of reaction? Just type in the comment box. Hurry up. So easy. 2 people are here. You can answer. Mithali, are you here? Okay, so I am waiting for your answer. Okay, fine. Yeah, that's correct. Feminist rearrangement. Yeah, correct answer. Feminist reaction. Correct. Good. I hope you also know the answer also. So now let's do the mechanism. Don't worry about. See, अगर आपको रिएक्शन का नाम नहीं पता है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. ठीक है, अगर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता है तब तो भाई बहुत ही दिक्कत वाली बात है. ठीक है, तब तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. लेकिन किसी को अगर रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन का नाम पता है और उससे मैकेनिज्म नहीं पता है तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है. लेकिन किसी को इफ़ समवन हैज़ अगर किसी को मैकेनिज्म पता है बट उस रिएक्शन का नाम नहीं पता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, द मेन थिंग इज मैकेनिज्म. सो नाउ आओ चले करते हैं मैकेनिज्म. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई भी रिएक्शन हो आप सबसे पहले देखो आप रीजेंट को, रीजेंट क्या है, और आप फिर देखो आप रिएक्टेंट को कि रिएक्टेंट क्या है. तो यहाँ पे जो हमारा रीजेंट है वो हमारा है NaOMe. NaOMe इज द बेस, यू नो दिस. एंड और हम सब जानते हैं, दुनिया का बच्चा जानता है कि बेस का काम क्या होता है. बेस का काम होता है प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना. इट मीन्स ये जो हमारा NaOMe है ये हमारा बेस है, और बेस की तरह जब काम करेगा तो ये हमारा प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट. तो कहाँ से लेगा प्रोटॉन ये देखते हैं. तो यहाँ पे है Br, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से आया आपके पास OMe माइनस. बिकॉज
ये हमारा बेस है, तो बेस क्या करेगा, बेस लेगा प्रोटॉन, और जब ये लेगा प्रोटॉन तो क्या होगा, ये बना इनोलेट, ये बना इनोलेट, और जब ये बनेगा इनोलेट, डू द रिएक्शन विद स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे यहाँ से बेस आया, ले लिया प्रोटॉन, और उसके बाद क्या करेंगे कुछ लोग कि यहाँ वैसे का वैसा ही, और यहाँ बस निगेटिव चार्ज, और करा दिया अटैक, इलेक्ट्रोफाइल में। बट दिस इज अ रॉन्ग ना, आई नो आंसर विल बी करेक्ट, आंसर आपका सही आएगा, बट आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा इनोलेट, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा जाना चाहेगा ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसीलिए हमें हमेशा इनोलेट बनाना चाहिए। ठीक है, आपको आदत डालनी चाहिए, राइट। दैट्स वाई द बेस विल टेक प्रोटॉन एंड आफ्टर दिस द इनोलेट विल फॉर्म, यहाँ बन गया इनोलेट। अब इसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे बी आर है, और बी आर क्या है, बी आर हमारा लिविंग ग्रुप होता है, तो अब क्या करें हम, अब ये होगा क्योंकि इसी रिएक्शन में, इसी कंपाउंड में हमारे पास लिविंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक होगा। इंट्रा मीन्स इस सेम मॉलिक्यूल में ही अटैक हो रहा है, इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक होगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में हमारे पास लिविंग ग्रुप भी अटैच है, इसीलिए अब क्या कराओ, ये जो O माइनस ये जो O माइनस है, इस चार्ज को कराएंगे डीलोकेलाइज, और ये जो आपका बनेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हो गया बी आर, और ये बच्चा जानता होगा, ये आपको बता देगा कि क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे बी आर हमारा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा और बी आर को निकाल देगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सॉरी, wait. I have just done mistake here. Here will be 6 number ring. Okay, fine. तो अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, 6 नंबर रिंग, और यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा OMe माइनस है, ये आपका अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, बिकॉज अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो जो रिएक्शन है कुछ हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे अब जो हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक चीज़ आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि NaOMe जो है ये आपका बेस की तरह भी काम करता है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे कब काम क्या करेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये आपका अटैक करेगा, ये बॉन्ड जाएगा ऊपर, एंड देन ये करेगा कम बैक, और जब ये करेगा कम बैक तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड because we have in the MEOH here in the solution, MEOH in the solution, so this negative charge will take a proton from this solution, and now you will find something like this. OMe, here is the hydrogen, so it means the correct answer is, tell me,
What is the correct answer? A is the correct answer. Okay, A is the correct answer, right? Yeah. So ये हमारा था फैबरस्की रिएक्शन बोलते हैं इसके, फैबरस्की रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ और, ये मोस्टली बच्चे क्या मतलब गलती कर सकते हैं, तो मोस्टली बच्चे गलत ये करेंगे कि ये जो हमारा NaOMe है इसको सीधा अटैक करा देंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल Br को और इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कहीं पे अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो हमें सबसे पहले उसे कराना है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन, हमें उसको सबसे पहले देनी है प्रायोरिटी। अगर वो नहीं होगा तो फिर कराएंगे ऐसा हम, ठीक है। इसीलिए मोस्टली बच्चे ये वाले टिक करके आते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द 11 नंबर। तो 11 नंबर में ये बोला जा रहा है, यहाँ पे रीज़न को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रीज़न हम लें ताकि हमें ये मिल जाए प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप सिंपल सा देखो, आप काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है, ओके। अगर आप ए लेते हो, अगर मान लिया हमने अगर ए लिया तो क्या होगा, ठीक है। अगर मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया तो ए में है NaBH4 एंड वी नो दैट NaBH4 is a weak reducing agent, right? So that's why it will reduce only COET. CO means it will reduce only ester, only reduce ester, only reduce ester। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये बस ईस्टर को ही कर पाएगा रिड्यूस, CHO को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। CHO को बिल्कुल टच भी नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा NaBH4 है ये हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा ईस्टर को ही करेगा रिड्यूस, CHO को टच भी नहीं करेगा। सो हमें अगर हम ए से चले तो हमें ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए ए ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ सी बी। अगर हम बी से अगर चले, अगर मान लिया हमने अगर बी ले लिया, यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे LiLH4 ले लिया, वी नो दैट LiLH4 जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका एक साथ 2-3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, CHO अल्डिहाइड और ईस्टर है। तो क्योंकि LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगर हम बी को लेंगे तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा, हमें मिलेगा कुछ ऐसा, जो कि ये गलत है, हमें ये जो मिला, हमें जो हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रोडक्ट, हमें ये नहीं मिल पाएगा। अगर हम बी से जाएंगे तो ये नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट, राइट। बी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ सी द सी ऑप्शन। अगर मैं सी ऑप्शन से जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये है CH2OH H plus LiLH4। तो पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं C ले रहा हूँ, ठीक है, CHO COET और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं OH CH2OH
H प्लस. यू नो दिस. यहाँ पे क्या बनेगा? एसिटल बनेगा, एसिटल. I hope you know the mechanism of this question. Okay, this is very easy. Because the aldehyde is a more reactive, so that's why acetal जो है ये हमारा यही हमारा aldehyde पे ही बनेगा. It means you will find something like this. ऐसा कुछ बनेगा. ओके, कुछ ऐसा, राइट. और उसके बाद LiLH4. तो ये जो हमारा LiLH4 है ये आपका कर देगा रिडक्शन ईस्टर का अल्कोहल में, है ना. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH2OH. और यहाँ पे कुछ ऐसा. और इसके बाद हम ले रहे हैं H3O प्लस. हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस. तो जब हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट. इट मीन्स जब हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो ये जो ग्रुप है आपका, ये वाला, ये जो ग्रुप है, दिस वन, ये आपका चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा. C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे CH2OH. तो C हमारा C से अगर हम जाएं तो हमें ये जो प्रोडक्ट है ये हमें मिल सकता है. ओके, C हमें मिल सकता है. ठीक है. अगर सेम तरीके से अगर आप D से भी जाओगे आप तो D से भी आपको मिल जाएगा सेम प्रोडक्ट. बट ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस. तो दैट्स वाई यू हैव टू चूज फ्रॉम C एंड D विच इज द बेस्ट. ओके, विच इज द बेस्ट. सो नाउ यू हैव टू डिसाइड विच आंसर इज करेक्ट, C और D. बिकॉज अगर आप C से भी जाओगे तो हमें ये मिल जाएगा. ठीक है. अगर आप D से भी जाओगे तो हमें ये मिलेगा, बट उसमें आपके माइनर प्रोडक्ट जो है ज़्यादा मिल जाएंगे उसमें, है ना. तो कैसे होगा वो ज़रा देख लेते हैं. अगर आप D से अगर जाओगे, D से, अगर आप D से अगर जा रहे हो, D, तो कुछ ऐसा है, राइट. CO2VT, C डबल बॉन्ड OH. ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C, ये हम ले रहे हैं रीजन. ठीक है, D वाला. ओके. तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा CO2VT हियर, CO2ET and here carbon, sulfur, here is a hydrogen. ये आपको थायो एसिडल टाइप का मिलेगा स्ट्रक्चर. ओके. लेकिन अगर आप इसके आगे अगर आप लोगे, अगर LiLH4 अगर आप लोगे, राइट, माइनस चार्ज हियर Li प्लस. तो यहाँ पे क्या होता है, तो क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारा एसिडिक है, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हमारा एसिडिक है. बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है ये आपका सल्फर के बगल में है. और अगर आप लोग, अगर आप LiLH4, तो यहाँ से जो H माइनस है ये आपका बेस की तरह काम करेगा. और क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है ये आपका इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज. और ये जो निगेटिव चार्ज है ये आपका सल्फर के साथ वैकेंट D ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है. इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है ये आपका मोर एसिडिक है. सो इसीलिए अगर आप लोगे अगर LiLH4 तो ये आपका ईस्टर को रिड्यूस ना करके, ठीक है, अगर आप लोगे अगर LiLH4 तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे
एसिडिक प्रोटॉन है, और हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस रिएक्शन जो होता है फास्टर होता है, तो यहाँ पे ईस्टर को रिड्यूस ना करके सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और जिसके कारण हमें जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है ये वाला नहीं मिल पाएगा. So that's why C is the most appropriate correct answer. Okay, C is the correct answer. C is the correct answer. C. Okay, I hope this is clear. Now go to 14th question. Oh my God, this is very easy question. This is a MSQ. Okay, this is a MSQ. See here, you have something like this, NaOMe, MEOH. Condition is a basic condition. Basic condition is here. और आप ये जानते हो कि इपोक्साइड पे बेसिक कंडीशन में हमेशा SN2 रिएक्शन होती है, राइट ना? आई होप यू नो दिस. दिस इज़ वेरी इजी. ओके, अगर इपोक्साइड है और अगर आप रिएक्शन करा रहे हो बेसिक कंडीशन में, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है वो आपका SN2 मीडियम से अटैक करता है. SN2 पाथवे से जाके अटैक करेगा. मीन्स कि वो लेस हिंडर्ड साइड पे जाके अटैक करेगा SN2 पाथवे से. तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ये हमारा कायरल सेंटर है. ओके, डोंट वरी. ओके, नाउ वी हैव OMe माइनस. ओके, OMe माइनस, इट विल वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड ये हमारा SN2 पाथवे से जाएगा. बिकॉज यहाँ पे कंडीशन जो है क्या है, वो हमारा बेसिक कंडीशन है. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ जो हमारा OMe माइनस है, ये क्या होगा, ये आपका अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड से, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और आपको कुछ देखने को कुछ ऐसा मिलेगा. नाउ, और आप ये जानते हो कि इसी कंपाउंड में एक हमारे पास Br है जो कि लिविंग ग्रुप है, और इसी कंपाउंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस भी है O माइनस. सो यहाँ पे SNNGP हो सकता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो सकता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक हो सकता है, Br जो है लीव कर जाएगा. ठीक है, तो ये O माइनस है, ये आपका अटैक कर देगा, और ये Br जो है लीव कर जाएगा, और आपको कुछ देखने को कुछ ऐसा मिल जाएगा. ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन हमारा SN2 हुआ, तो इसीलिए कार्बन का आयन तो बन ही नहीं सकता है. ठीक है, और जब कार्बन का आयन बना ही नहीं, तो फिर रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, है ना? ओके, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा C and D. C and D is a correct answer. It proceed via concerted SN2 pathway and it involve neighboring group participation. Okay, so this is done. Now the third question. Okay, third question is, you have to give time. This is a little bit lengthy question, okay, in the exam. Okay, so see here. Okay, so in the first question, you have to check, because this is a MSQ. Okay, so you have to do all the questions individually and check whether you are getting phenol or not, because यहाँ बोला गया है कि कौन सा रिएक्शन में हमें फेनॉल मिलेगा, कौन से रिएक्शन की प्रोडक्ट में फेनॉल मिलेगा.
जिसमें मिलेगा फिनॉल वही हमारा आंसर होगा। ओके, जिसमें मिलेगा फिनॉल वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए से चेक करते हैं, ए से। दिस क्वेश्चन इज MSQ। ए से चेक करते हैं। तो अगर मैं लिया बेंजीन रिंग और मैं ले रहा हूँ अगर कॉन्ग फर्स्ट स्टेप में ले रहा हूँ कॉन्ग H2SO4 एंड हीट, तो आपको क्या होगा, दिस इज अ सल्फोनेशन रिएक्शन ऑन द बेंजीन। ठीक है, तो क्या होगा, SO3H आकर के बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। आई होप यू नो दिस मैकेनिज्म। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू द मैकेनिज्म। ओके, दिस इज वेरी इजी, you have to try at least yourself. So this is the SO3H, right? And now we have here base KOH. Okay, so we have here base, and this KOH, let me draw something like this. Wait, here is the SO3H, here is a double bond, something like this. Okay, and here we have QH. Okay, and this OH minus will work as a nucleophile, right? Attack on this, the bond will gonna shift on that position, negative charge, SO3H, here is the OH, and then what happened, this negative charge come back and this SO3H will leave and you will find phenol. Okay, such reactions happen at a very high temperature and high pressure. Okay, this is not a normal reaction. Okay, so you have to give a very high temperature and high pressure, then it will be occur. Okay, so you have to take all the possibility. So that's why I am doing this. So it means अगर आप A से अगर कराओगे रिएक्शन इन सब रीजन से तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। इट मीन्स कि A आपका सही आंसर है। नाउ चेक द B ऑप्शन। लेट मी इरेज ऑल दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट if you want. Now check the B option. B is very easy, I think, right? B is very easy. Okay, see here, because here is the temperature is very high. Okay, that's why अगर यहाँ पे टेम्परेचर होगा तभी ये ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कोई भी न्यूक्लियोफाइल सिंपल बेंजीन रिंग को ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ अ हाईली स्टेबल। ओके, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके जो CL है ये आपका OH माइनस जो है आपका सीधे आकर के इस CL को बाहर निकाल देता है और ये आपका फेनॉल बन जाता है। ये आपका पॉसिबल है, बट ये आपका पॉसिबल है कब, ओनली एट अ 300 डिग्री सेल्सियस एट अ हाई टेम्परेचर। इट मीन्स कि बी आंसर इज करेक्ट। सी, अगर आपके पास दो क्वेश्चन हैं कि तुम ये बताओ हमें, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे OH माइनस है, सॉरी मान लो कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, और एक आपके पास सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, सी, हम क्लोरोबेंजीन को, मतलब कि ऐसा कोई भी बेंजीन रिंग हो जिससे अगर लिविंग ग्रुप अटैच हो, लाइक हैलाइड्स हो गया, ठीक है, तो उसको हम सिंपली हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ हाईली स्टेबल। अगर आपको ये करवाना है तो आपको हाईली टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। इट मीन्स कि बी इज आल्सो करेक्ट। नाउ सी द सी ऑप्शन। सी तो आपको पता ही होगा,
दिस इज अ सैंडवेयर रिएक्शन, आई होप यू नो दिस। सी में क्या हो रहा है, सी में आपके पास NO2 है, हमने लिया है H2PDC, राइट, इट विल reduce the NO2 into NH2, ओके, NH2, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, Na2HCl, ये आपका डाइजोनियम साल्ट बनाएगा, बेंजीन BDC, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ये कैसा बनता है, ये आपका N2 प्लस Cl माइनस बनता है। अब इसके बाद OH माइनस ले रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा फेनॉल OH। इसका मतलब कि C से भी हमें फेनॉल मिल रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सैंडवेयर रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन। आई होप यू नो दिस, ओके। इसको बोलते हैं सैंडवेयर रिएक्शन, ओके। Now see, sir, all correct. Yeah, correct. Yeah, good. Now check the D option, because you know ना, मतलब कि अगर मैं बस बता दूँ कि इसमें से सारे के सारे करेक्ट हैं, और मैं अगर रीज़न अगर ना दूँ सारे के सारे को, तो फिर बच्चे लोग इसमें दे विल नॉट सेटिस्फाई, they want mechanism, they want reason, how it is possible. So thanks Mithali, you are till now. Now check the D option, okay. Let's erase, just we have 4 more questions are left, then we will stop, okay. So now see, in the D, benzene ring here, CH3, CH double bond, CH2, H plus, right? I hope you know this, because we have H plus here, so double bond will take proton, right? This is basically Friedel-Crafts alkylation type reaction, okay. So you will find something like this. So you will find CH3, CH positive charge here, CH3, okay. Sorry, here is a hydrogen, okay, fine. Now what happened, just do the Friedel-Crafts reaction and you will get something like this. This is our फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट जब हमने कराई फर्स्ट स्टेप रिएक्शन यहाँ पे, तो हमें ये मिला। अब इसके बाद हम करा रहे सेकेंड स्टेप। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। तो मेरे पास कुछ ऐसा था, हाइड्रोजन, और यहाँ पे ले रहे हैं हम O2 ले रहे हैं, O2। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, क्यूमीन बनता है, क्यूमीन। ये यहाँ तो बनेगा, ये आपका क्यूमीन बनेगा कुछ ऐसा। ये जो H है, बिकॉज हियर इज अ वन हाइड्रोजन इन लेफ्ट टू दिस कार्बन, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये आपका CH3 और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन, ओके। अब इसके बाद हम लेते हैं H+। ये जो है ऑक्सीजन लोन पेयर विल टेक H+,
और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा देखने को, CH3 here OH2 plus, right, and here is also CH3. Now because we know that the O single bond O is a very weak bond, so it wants to break. यह अब टूटना चाहेगा, और ये कैसे टूटता है, तो यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट. कैसे होगा, ये जो बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होकर के इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक हो जाता है, और जो आपका H2 है वो आपका लीव कर जाता है, और आपको फिर कुछ ऐसा मिलेगा देखने को. लेट मी इरेज ऑल दिस. आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को. Here is the O, here is the CH3, and here is a positive charge. Okay, right. And now the H2O will come, because we have taken here H plus. It means H2 is also present, so it will attack on this carbocation, right? And then what happened? Then you will find something like this. See here. Actually स्पेस की कमी हो गई है थोड़ा. आई हैव टू इरेज. ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. ओके, यहाँ तक. ओके, सी. तो जब H2O ने अटैक किया, CH3 positive charge, right? It will gonna depopulation here, so you will find something like this, OH, and now this OH gonna come back, and then see how this is happening here. See, यहाँ पे था H2O plus था, right? Correct? Okay. Now what happened? This oxygen lone pair will take proton of this one. Okay, and you will find something like this. मैं इरेज करते जा रहा हूँ. ओके, यू हैव टू नोट पॉजिटिव चार्ज CH3, and here you have OH. Now because this oxygen got the positive charge, अब ये चाहेगा कि हम न्यूट्रलाइज हो जाए, और ये कैसे होगा, तो ये इस ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे जाएगा, कम बैक करेगा और इसको निकाल देगा, एंड देन यू विल गेट अ फेनॉल. इट मीन्स कि ABCD इसके सारे आंसर सही हैं. ABCD ये हमारा था. लास्ट पार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि I mean, in the last part, the last option, many students will do mistake. Now see this question. This is a very easy question, I think, which is aromatic in nature. There are three conditions. First is a 4n+2 pi electron to be a aromatic, and the second one should be a cyclic molecule, and the third one is a sp2 hybridized, right, all atom, right? Okay, so you can also tell here you have something like this. So here pi electron, nitrogen lone pair here also, but these lone pairs are localized. So we have 6 pi electrons here in the ring. This one. Okay, 6 pi electron, and it is a cyclic. Yes, 6 pi electron है, cyclic भी है, और ये आपका sp2 hybridized भी है. It means this is aromatic. Now check this one. 2 pi, see here, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14. ये हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन है,
और ये आपका 4n+2 को फॉलो करता है, ठीक है। और ये हमारा साइक्लिक भी है और ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज भी है आइटम, इसीलिए C भी हमारा एरोमेटिक है। नाउ चेक द बी ऑप्शन। हियर ऑक्सीजन हैव लोन पेयर, ओके, so 2 to 4 to 6. So here we have 6 pi electron, right? So yeah, so it will follow the 4n+2 pi electron, right? Yes, yes, it is follow. साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, ठीक है। एंड देन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या सारे एटम? यस, बी ऑप्शन में सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं, दैट्स वाई बी विल बी also a answer. B is also a aromatic, okay, B is also aromatic. Now check the D option. So this is the lone pair here, lone pair here, lone pair here, lone pair here. So you have 2 pi electron, 2 pi electron, 2 pi electron, 2 pi electron, means 2 to 4 to 6 to 8 pi electron. In the D we have 8 pi electron. और ये जो है हमारा 4n+2 को फॉलो नहीं करता है, साइक्लिक है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, लेकिन 4n+2 को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए डी जो है हमारा एरोमेटिक नहीं है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज A.B.C. ओके, नाउ सी द 15 नंबर, नाउ सी द 15 नंबर। सो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर इसमें कि ये जो क्वेश्चन है, लाइक विच ऑफ द कंपाउंड शो ओनली 2 सिग्नल्स इंक्लूडिंग 1 H-NMR एंड अ स्ट्रॉन्ग IR बैंड एट 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। सो हमें ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में 2 सिग्नल मिल रहे हैं 1 H-NMR के, और उसकी जो IR बैंड है वो हमारा 1690 के आसपास होना चाहिए। आई होप यू नो दिस बिकॉज सो लेट्स चेक इंडिविजुअली ऑप्शन बाय ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ अगर हम पहला ऑप्शन से शुरुआत करते हैं इसमें, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्नल प्रोटॉन मिल जाएंगे, एक ये वाले हाइड्रोजन, एक ये वाले हाइड्रोजन, ओके, और एक ये वाला हाइड्रोजन, राइट, ओके। बिकॉज द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, so that's why हमें क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स वी हैव टू चूज यूनिक प्रोटॉन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दिस प्रोटॉन have 2 signals, it have 2 signals, right, and because the C double bond O group is attached here, so that's why it have a IR frequency approx 1690 because it is a ketone here. Now see this one, in the B option, this molecule is also symmetric. If you divide by this side, if you draw a line here, you will find this is a symmetric, okay. And because this is also a symmetry here, and you will find here 4 signal, 1 2 3 4. It means here is a hydrogen, here is a hydrogen, here is a hydrogen, here is a hydrogen, all are 4 different hydrogens. That's why here is a 4 signal here, 4 signal, okay, right. Now check the C option, okay. In the C option, this is also like a symmetry. If you see the 2 carbonyl, there is a 1 CH2 between, okay. Here same thing happening here,
this is a ester here. Okay, this is a ester, this is a ester, and between the two ester, the carbon is a available here, like a CH group is available. So it is also a symmetry. Okay, that's why here you have only two signals. Only this hydrogen and this hydrogen are two different hydrogens, two different signals. It is also two signals. But in the case of D option, here we have, this is also like a symmetry. Okay, right? So this hydrogen and this hydrogen are two different signals. Two signals here also. And because here is a ketone, and we know that the ketone IR frequency is approx 60-90. So that's why A and D is a correct answer. A and D is a correct answer. Okay. Why not C? Because in the C we have ester group, and in the ester group the frequency is low than ketone. Okay. Yeah. Now see the question number 16. In the question number 16, the total number of compounds that form phenyl hydrazone derivative under acidic condition. Okay, you have to check which of the following compound will form phenyl hydrazone derivative under acidic condition. So I will tell you just one option here. I will tell you this option, rest you and check. Okay, मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको करना होगा बस. ओके, सी. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें फेनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव मिलेगा, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट. नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट ऑप्शन. सो जस्ट डू द रिएक्शन. Okay, now this H plus here, right? It will take H plus because here it's written under the acidic condition. Okay, and then what happen? Will attack, bond gonna shift, और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा देखने को. Okay, here is a positive charge, right? So here this oxygen lone pair यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर प्लस माइनस H plus, and you will find something like this. Right, and because OH2 plus is a living group, so it can leave. This nitrogen lone pair will push their lone pair downward, and then this H2O will leave. Okay, and you will get something like this. And after the deprotonation, here is the hydrogen. Right, and
and after the deprotonation you will get a phenyl hydrazone derivative. Phenyl hydrazone derivative, something like this. This is a phenyl hydrazone derivative. You have to check whether such type of compound is forming or not. Okay, if they form, it means this compound will form phenyl hydrazone derivative. It means this compound will form phenyl hydrazone derivative. Similarly, you have to check all the compound by doing the reaction with pH, NH, NH2 and H+. Okay, if you got phenyl hydrazone derivative, then it means this compound will give. Okay, so in a similar manner you have to check individually all the compound. Okay, so I have done this. Okay, so let me tell you the answer which compound will give. See, this compound, will give. Okay, this compound will give, this compound will give, and this compound will give, and this compound will give. It means total number is a 5. 5 is the total number of compound which gives phenyl hydrazone derivative under acidic condition. You have to do similarly. Okay, मैंने आपको एक यहाँ पे करके दिखा दिया है. आप ऐसे ही सिमिलरली आपको करना है, सारे को चेक करना है. Okay, individually. Now see the question number 17. So in the 17 you have asked how many the amount of gram of NaOH required for complete neutralization of 1 mole of the following compound. Okay, so this is the 1 mole, right? This is a 1 mole compound, and you have to tell how much base NaOH will be needed to complete neutralize. Okay, see here, you know that the base will take proton, right? OH minus. So there are we have to see the very most acidic proton. Okay, so most acidic proton is this one, carboxylic acid group, hydrogen bonded to carboxylic acid is more acidic. That's why this is more acidic. Now this is also more acidic because this is also more acidic because this hydrogen is attached to nitrogen, and then the negative charge is stabilized by carbonyl. Okay, now this is also a more acidic. This SO3H is hydrogen is also more acidic. Okay, so you have four hydrogens are present, 4 acidic hydrogen present, right? It means 4 most acidic hydrogen present in this molecule. So that's why you need 4 mole of OH, 4 mole of NaOH. Okay, and if you know the mole, if you know the value of mole, then you can easily find the what is the amount of the base. So we know that mole equal to weight by molecular weight, and here because there is a 4 acidic proton, so we need I think fine, there is no mistake. Okay, so that's why
here you have we have 4 most acidic hydrogen, so that's why we will take a 4 mole base, 4 mole sodium hydroxide. Okay, yeah, see here, so then 4 equal to वेट हमें निकालना है और हमें ये मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 40 है, तो इट मीन्स it will be weight equal to 160 gram of NaOH. Okay, it will be the answer. Right, it will be the answer. Now let's go to second question. Let me check the answer. Okay, I have doubt. Answer key I think I have not answer key of this question. Let me check. Just wait a minute. I am checking the answer. Okay, fine. Okay, so here the answer will be, just wait, let me check the answer. Okay, yeah, it's correct. Yeah, it's correct. 160 gram of NaOH will be required to neutralize this 1 mole of solving compound. Okay, fine. Yeah. Now see the 16 number question. You have something here, Fredel-Crafts reaction with 2-chloro 3-methyl butane. So butane here, 3-methyl, and here chloro. Okay. Now after this, we are taken here AlCl3, right? So this chlorine will give electron to this Lewis acid, and then it will leave. Okay, wait. Then CH3, Ame, CH3, AlCl3, AlCl3, here positive charge, here negative charge. Okay, and you know that it will leave because it have a positive charge, so Cl wants to neutralize. And now आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, Ame, CH3, we have positive charge here. Okay, now this one, और it has एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इस कार्बोकेटायन को हम रीअरेंज करा सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट करा करके, हाइड्राइड शिफ्ट. सो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, Ame पॉजिटिव हियर एंड CH3 CH2. ओके, राइट. ओके, फाइन. सो हमें पूछा यह गया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल, कितने पॉसिबल हैं, टोटल पॉसिबल बताने हैं कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा. तो पहली बात कि जो मेरा एनिसोल है, एनिसोल क्या होता है? एनिसोल मीन्स
Anisole is like, draw the structure. It means यहाँ जो बनेगी anisole, here you have OCH3, right? So या तो बिकॉज ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा अटैच्ड है इस बेंजीन रिंग से, दैट्स वाई या तो बाहर से तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे सबस्टिट्यूशन हो सकता है, तो या तो यहाँ पे होगा ऑर्थो पे होगा, राइट, ऑर्थो पे या पैरा पे, राइट, बट वी हैव टू ऑर्थो हियर, वी हैव टू ऑर्थो हियर, सो ओके सी, या तो ऑर्थो पे, वेट, या तो ऑर्थो पे होगी या तो पैरा पे जाएगा, बिकॉज दिस OCH3 इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट्स वाई इट विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, और हमें यहाँ पे सारे के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं, तो हम ऑर्थो पे भी भेजेंगे और हम पैरा पे भी भेजेंगे, राइट, so it can goes here, it can goes here in the same way, wait, it can goes here and it can goes here, para, it means there are 4 possibility of the product, there are 4 possibility, the answer will be 4, okay. तो एक बार क्या होगा, ये जो हमारा पास ऑर्थो पे जाएगा, तो दूसरा बार क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटी पैरा पे भी जा सकती है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या होगा, ये भी आपका ऑर्थो पे जा सकता है और ये भी आपका पैरा पे जा सकता है, तो 2 + 2 विल बी 4 पॉसिबिलिटी हियर ऑफ मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, this is the last question of this session. Oh yeah, I have speaked so much, मैंने काफ़ी बोला है आज, it's like my throat is dried, yeah, okay fine. See, तो यहाँ पे हमारे पास है Na(N3) है, ठीक है, हमें बतानी है कि कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट। Na(N3) है, राइट, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, आप ओके, Na(N3) है तो क्या होगा, सो N3- will attack on this center, Br will leave, right, what happened here is really N3, and after this we are taking H2PDC, reducing agent, H2PDC, we know that this will reduce the N3 to NH2, okay, NH2, and this will be the answer. A is the correct answer. If someone can ask why the B is not answered, the B will be not answered because if you eliminate the water here, H2O here, if you eliminate the water and join this bond, okay, then you will get a 4-member ring. That is not a stable, okay, 4-member ring is not a stable, it's a highly strained, okay, so that's why A is the correct answer of this reaction, okay. I hope you all have understood the IIT JAM 2015 Organic Chemistry
प्रीवियस ईयर पेपर, दिस इज़ फिनिश्ड। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे वो मैंने सारे के सारे करा दिए। इट मीन्स टोटल 19 क्वेश्चन थे IIT जैम 2015 में ऑर्गेनिक में। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कि ऑर्गेनिक पोर्शन से अगर 19 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, लाइक हाउ मच इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने काफ़ी अपना एनर्जी को लगाया है बोलने में, समझाने में। एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु आर ज्वाइन टिल नाउ, अभी तक हमारे साथ हैं, तहे दिल से धन्यवाद आपको। या ऐसे ही हम नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और ईयर का हम ये ऑर्गेनिक का प्रीवियस ईयर पेपर लाएंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून। एंड यस, और अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ, ओके, रिलेटेड टू मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, सी यू सून।